Hello, my dear students. Welcome to my channel Talent Classes, the Castle of Knowledge. I hope you all enjoyed your vacations and now it's the time to get back to studies. So, let's begin with the first chapter of Maths. Class 10, Chapter 1, Real Numbers. Shall we start? Okay. Chapter 1, NCERT book, Class 10, Real Numbers. Let's start with the definition of real numbers. What are real numbers? So, if you recall, in lower grades like 5th grade, you learnt about natural numbers. Then in the next grade, you learnt about whole numbers. Then in 6th grade, integers, they were introduced. After integers, in 7th grade, they introduced rational numbers. Then recently in 9th grade, irrational numbers were introduced, right? See, बाकी सारे numbers याद नहीं भी हों तो irrational तो like you have done in 9th grade only and it's been only 2-3 months कि हमने 9th class को छोड़ा है. So irrational numbers I suppose कि आप सबको आता है. Let's start with natural numbers. Natural numbers start from 1. 1, 2, 3, 4. Like if you will count something, you will start your counting with 1. So always remember natural numbers are used for counting. 1, 2, 3, 4 like this. Whole numbers, just you add 0 in the class of natural numbers, in the group of natural numbers, you just add 0. Then this is a set of whole numbers. Now, if you include negative numbers also to the group of whole numbers like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, and so on both the sides, they can be like there are many numbers, unlimited. Then comes rational numbers. Rational numbers, a very simple definition, the numbers which are in the form of P by Q, where P and Q are integers, where P and Q are integers. And very important thing, सबको याद आ रहा होगा, where P and Q are integers and yes, Q is not equal to 0. This is very important. Q is not equal to 0. And remember in maths, denominator can never be 0. कभी भी ऐसा हो कि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, so that number is not defined. वो infinity हो जाता है and that is not defined. So it's very important that when you write the definition of rational number, you should mention this thing, that P and Q are integers, और इससे भी ज़्यादा important ये बताना है कि Q is not equal to 0. For example, you can take any number 1 by 2, 3 by 4, all the fractional numbers. Then comes irrational numbers. Irrational numbers, root wale numbers, right? So, root 2, root 3, root 5. Root 4 क्यों नहीं लिखा मैंने? Root 2 is irrational, root 3, root 5. Why not root 4? Because root 4 is a perfect square. And being a perfect square, you will write the square root of 4 is 2. And 2 is a natural number, whole number, integer, rational number, but not irrational number. Root 4 is 2. अब 2 को तो हम irrational नहीं बोलेंगे. So,
If inside the root you have perfect squares, perfect cubes, and so on, then those numbers are not irrational numbers. Those are rational numbers. So only those numbers which cannot be written as a whole number by eliminating the root, they'll remain in root. And if you will find their value, the value will be non-terminating and non-repeating. Non-terminating and non-repeating. Okay, so irrational numbers whose decimal expansion is non-terminating, non-repeating, and they cannot come out of the root as whole number or integer. And all these numbers together are known as real numbers. ये सारे नंबर मिला के ये सभी रियल नंबर्स हैं. So real number can be any of this kind. अच्छा, अब सारे नंबर्स ये रियल नंबर्स होते हैं, तो व्हाट्स द नीड टू स्टडी देम? जब हमने सभी नंबर्स पढ़ लिए, तो व्हाई वी हैव गिवन अ स्पेसिफिक नेम रियल नंबर्स? क्या कोई नंबर्स अनरियल भी होते हैं? So yes, if we have real numbers, so we have on the other hand imaginary numbers also. We don't have to deal with them, but yes, imaginary numbers also exist in our maths. For example, if I ask you, what is the square root of -1? Square root of -1. What would you say? Square root of negative numbers is not defined. Square root of negative numbers is not defined. Because there is no number of which the square is -1. If I square -1, what I'll get? -1 times -1. -1 into -1 क्या आने वाला है? 1. इसका मतलब जब हमने -1 को स्क्वायर किया तो 1 आ गया. -1 का स्क्वायर 1. यानी कि कभी भी -1 नहीं आएगा. There will be no number जिसको हम स्क्वायर करते हैं and you get a negative number. इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स होता ही नहीं है. So this number is not defined. We call these kind of numbers imaginary numbers. You will study these in 11th grade in detail, so don't worry. So far in this class, we have to discuss only about real numbers. Okay, let's move on. You can read all this. Fundamental theorem of arithmetic. This is very simple. Fundamental theorem of arithmetic. If I give you some number, any number, suppose like let's take 52, and I ask you write 52 as a product of its prime factors. What you will do, you all know prime factorization from very lower classes. हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड किया तो this is 26. Once again it's an even number. 2 से डिवाइड करते हैं, we got 13, and 13 is a prime number, so we'll divide it by 13 only. Now we can simply say that 52 can be written as 2 times 2 times 13. 52 जो है वो इन तीन numbers का product है, and this is a unique like these group of numbers is unique. ये वाला जो अरेंजमेंट है, this 2 times 2 like 2 square times 13, ये यूनिक है. किसी और नंबर को हम इन्हीं फैक्टर्स से डिफाइन नहीं कर सकते. That means every different number has its different prime factorization. So fundamental theorem of arithmetic says that any number can be written as a product of its prime factors. Then comes the uniqueness of fundamental theorem, which says that this order is
Yeah, you can read this. Somewhere it's written that this prime factorization is unique. Okay, here I got. The prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factors. Like order can be different. You can write 13 times 2 times 2. Order may vary, but this prime factorization is unique for all natural numbers. Like किसी और नेचुरल नंबर का यही प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता. सो दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि किसी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें आता है, कोई बड़ी बात यहाँ नहीं कह रहे हैं. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत पहले से आता है. बस वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर कोई नंबर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा हर नंबर के लिए यूनिक होगा, डिफरेंट होगा. नाउ एग्जाम्पल वन, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. Consider the numbers 4 to the power n, where n is a natural number. Consider the numbers 4 to the power n. Numbers 4 to the power n. See, they are not saying consider the number. Consider the numbers because 4 to the power n is a natural number. n 1 होगा तो 4 की power 1 हो जाएगी. n 2 4 की power 2. In this way, you are going to get different numbers for different powers. उनका क्वेश्चन ये है, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. क्या कोई ऐसी n की वैल्यू होगी जिस पर 4 की पावर n 0 पे एंड होता हो, जिस पे 4 की पावर n 0 पे एंड हो जाए? क्या कोई n की ऐसी वैल्यू होगी? लेट्स चेक. अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर किसी की भी पावर को या किसी भी नंबर को 0 पे एंड होना होता हो तो उसका एक फैक्टर क्या होना चाहिए? लाइक मुझे चाहिए कि मैं किसी नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करूं और एंड में आ जाए 0. उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे पास 10 हो. लाइक आई वांट 40 एंड आई हैव 4 ऑलरेडी, तो मुझे उसमें 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट 4 के खुद के पास तो 2 है. जिनके पास ऑलरेडी 2 होता है उनमें अगर हम सिर्फ 5 भी मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें 10 मिल जाएगा. लाइक हम इवन नंबर्स में सिर्फ 5 भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 आ जाता है. इसका मतलब 2 और 5 दोनों बहुत जरूरी हैं. वी नीड 2 and 5 बोथ इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर टू गेट 10. अगर किसी नंबर को 0 पे एंड कराना है तो उसके अंदर 2 और 5 दोनों नंबर्स होने चाहिए. Both the numbers should be there in their prime factorization. Now let's come back to 4 to the power n. यहां अगर मैं 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूं तो I'll get 2 times 2. Everyone knows 4 is 2 squared and one n is there outside. So this is 2 to the power 2n. 2 to the power 2n, right? अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में तो हमें केवल 2 ही मिला. Only 2 is there as the prime factor of 4 to the power n. To end this number at 0, there should be 5 also. 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी आना चाहिए था, तब जाके ये 0 पे एंड होता, क्योंकि 2 तो हमारे पास है, हमें नीड है 5 की. बट 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम की 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर है तो वो यही होगा. इसके अलावा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन और कुछ नहीं हो सकता. इसका मतलब इसके पास कभी भी 5 नहीं होगा, इसीलिए कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा. वेरी सिंपल. अब इसको अपने वर्ड्स में हम लिख सकते हैं एक बार. लाइक लेट्स चेक व्हाट दे आर राइटिंग. If the number 4 to the power n for any n
were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5, है ना? अगर इसे 0 पे एंड कराना था तो ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए था. 5 से डिविजिबल होने का मतलब that the prime factorization of 4 to the power n would contain the prime 5. कि 4 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए था. This is not possible because 4 to the power n is equal to 2 to the power 2n. So the only prime in the factorization of 4n is 2. एक ही नंबर है 2. So other primes, so the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4n. 2 के अलावा यहाँ पर कोई और प्राइम नहीं है. So there is no natural number n for which 4 to the power n ends with the digit 0. ऐसा कोई n नहीं होगा जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर एंड हो जाए. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स फ्रीक्वेंटली. बट वो 4 की पावर n नहीं होगा. इट कैन बी लाइक कुछ भी हो सकता है. 5 की पावर n, 6 की पावर n, 7 की पावर n, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 2. अब ये तो हमने बहुत पहले सीख लिया था ना लोअर क्लासेस में. 5th 6th में हम एलसीएम एचसीएफ करना सीख जाते हैं. अभी ये 10th में हमें फिर से सिखा रहे हैं बिकॉज दे ऑल्सो नो कि बच्चे भूल गए 4-5 साल में, है ना. तो फिर से सीख लेते हैं. 6 और 20 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. बहुत ही आसान है. मेरे करने से पहले आंसर्स आ गए होंगे तुम लोगों के. तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन चलो जिनको आता है इट्स वेरी गुड. जिन्हें नहीं आता है एक और बार समझेंगे. 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन. 6 इवन नंबर है. 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 से डिवाइड किया तो 3 आया. अभी 3 तो प्राइम नंबर है 1. ठीक है. दैट मीन्स 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 times 3. द सेम प्रोसेस विल रिपीट विथ 20. इवन नंबर है. 2 से स्टार्ट करेंगे 10. 10 अभी भी इवन है. फिर 2 से स्टार्ट किया 5 आया. फिर 5 से किया तो 1 आ गया. दैट मीन्स दिस इज 2 times 5. दोनों की प्राइम फैक्टर्स रेडी हैं. नाउ व्हाट वी नीड इज एलसीएम एंड एचसीएफ. पहला एचसीएफ निकालेंगे. Okay, let's find HCF of 6 and 20. HCF means highest common factor. सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर कॉमन है जो दोनों में है. 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है. इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में. तो यही कॉमन है और यही हाईएस्ट है. कॉमन फैक्टर एक ही है तो बस दिस इज द ओनली नंबर व्हिच इज कंसीडर्ड एज एचसीएफ. नाउ टू फाइंड एलसीएम. नाउ एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. अब इसमें हम क्या करते हैं जो कॉमन है ना वो तो लिखना ही है. कॉमन वाले को तो लिख लो. उसके बाद जो अनकॉमन है उन्हें भी एक एक बार लिख लेते हैं. तो 3 लिखा हमने. कॉमन वाला एक बार. यू डोंट नीड टू राइट टू टाइम्स. कॉमन वाले को एक ही बार लिखा. उसके बाद जो कॉमन नहीं है उनको हम एक एक बार सारे नंबर्स को लिख देंगे. लाइक इसका 3 लिख दिया, इसका 2 और इसका 5. मीन्स ये वाला 2 सिंगल टाइम, देन 3 times 2 times 5. दिस इज एलसीएम. 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 times 5 is 60. This is HCF. अब यहाँ एक और चीज हमें समझनी है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है इसका कि HCF multiplied by LCM is equal to product of two numbers. Product of two numbers is equal to the product of their HCF and LCM. Let's verify. Let's check कि ऐसा सच में होता है कि नहीं. So LCM times HCF. LCM times HCF. HCF is 2, LCM is 60. ये आ गया 120. LCM और HCF को इंटू किया 120 आया. Now let's multiply the numbers. हमारे दो numbers हैं 6 और 20. 6 times 20 is again 120. So verified. So
Notice that this is very important result. Note down, HCF times LCM is product of two numbers. इसका यूज करके वो हमसे पूछते हैं, like sometimes they'll give you LCM and the two numbers and now they'll ask you कि HCF निकालो. तो यहाँ पर हमें HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना होता है, हमें इस फॉर्मूले का यूज करके HCF या LCM निकालना रहता है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3 वो इसी पर बेस्ड है. Okay, let's do example 3. Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method. अच्छा, पहले बोला है HCF निकालो by prime factorization method. उसके बाद देखो what they are writing and hence find their LCM. Hence find मतलब कि HCF निकालने के बाद LCM भी निकाल दो. They don't mean कि हमें फिर से prime factorization करना है. Once you are finding HCF, no, so you're done with prime factorization. After that, you have to use this result to find LCM. So let's do prime factorization of 96. चलो, जिनको आता है fast quickly you have to solve. 2 से किया 48, 2 से 24. मेरे निकालने के पहले आ जाना चाहिए. 2 से 12, 6, फिर 2 से किया. You just have to keep on dividing until you get 1. Right? 2, 2, 2, 2, 3. This is of 96. दूसरा नंबर है 404. With 2, 202. With 2 it's 101. अरे बाप रे, 101 किसके टेबल में आएगा? चेक करो. 7 में नहीं, 8 में नहीं, 7 में नहीं आएगा, 13 में no. Let's consider it a prime number. 1011. चलो, अब हम निकालेंगे इसका HCF. HCF means what? Common factors. अभी दोनों के common factors जरा चेक करते हैं. I'll prefer writing this way: 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 3. है ना? 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 2 and then a 3. Okay. And 404 is 2 times 2 times 101. HCF is the highest common factor. तो common factor ये भी है, ये भी है. Highest consider करें तो दोनों का product हो जाएगा. इन दो 2 में से हमने एक 2 को लिखा है कॉमन, इन दो 2 में से हमने दूसरे 2 को कॉमन लिखा है, तो 2 times 2 which is 4. 4 is HCF. ठीक है, दोनों के फैक्टर्स हमने लिख लिए पहले, उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स थे उनका प्रोडक्ट करके हमने HCF निकाल लिया. Now the HCF is done, so let's find LCM with this formula. Very easy. Formula is HCF times LCM equals to product of two numbers. HCF times LCM. We don't know. LCM is LCM. So HCF times LCM is product of two numbers. The two numbers are 96 times 404. इसके बाद हम क्या करते हैं? We'll divide both the sides by 4. 4 से divide कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 से इसको डिवाइड किया 101. मल्टीप्लाई करो जल्दी से. 101 इंटू 96. फर्स्ट क्या आएगा? नाइन सिक्स. This is the LCM. Okay. Note down this question, and example 4 is your homework and also exercise 1.1. See, if you really want to be successful in your 10th grade, especially talking about maths, so please like coop up with me. जितना मैंने कराया है उतना अगर सेम डे पे कर लिया, एंड व्हाट ऑल आई एम गिविंग यू एज होमवर्क उसे सेम डे पे कंप्लीट करते हो, तो लाइक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.
आपकी एनुअल एग्जाम बहुत ही इजीली निकल जाएगी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी डाउट्स हैं यू कैन फ्रीली राइट, जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज, वी कैन टेक देम इन द नेक्स्ट क्लास। In the next class, we are going to discuss exercise 1.1, but we'll not do all the questions. आप होमवर्क करके आइए, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे we'll take them in the class. और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जिनको भी जरूरत है, जितने भी स्टूडेंट्स आपके परिचित, आपके क्लासमेट्स जो 10th ग्रेड में हैं, सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ये एडवांटेज सिर्फ आप तक ना रहे, सभी तक पहुंचे। ओके, बाय, फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।